Okay, let me share the screen. Okay, तो last time जहाँ हमने खत्म किया था वो था वाइनगार्टन इक्वेशंस हमने किया था. So let's continue from there. Basically ये था कि हमारा जो surface normal है उसके जो partial derivatives है, अगर मेरे पास एक surface patch है तो वहाँ पे एक point है और मैंने एक tangent plane डाला है, right? So then I have this unit surface normal which is perpendicular to this tangent plane at this point. So then because it's a vector of length 1, therefore n is perpendicular to its differential, and n dot dn is equal to 0, which implies, because n is differentiable, that n dot n sub u, when its partial with respect to both variables, should be 0. तो अगर ये 0 है इसका मतलब ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट प्लेन है इसी में कहीं पे ये वेक्टर nu भी होना चाहिए और ये nv भी होना चाहिए, right? Or then we showed that you can write them how, when you write them as a linear combination of the bases of this tangent plane. The basis of the tangent plane है क्या? It is the partial r sub u or partial r sub v. So because we can write any vector in this plane in terms of as a linear combination of the r sub u and r sub v, Weingarten equations show us that when we write nu and n sub v in terms of r sub u and r sub v, then the coefficients, the numbers in that linear combination would be some combination of the first and second order partial derivatives. यानी explicitly वो ये होगा. Down. कल क्या था जिसने क्लास ली वो तो पता ही होगा कि हमें मिला था बेसिकली, इसको क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ क्लिक हो गया, ये क्या आ गया इसमें, क्लिक हो गया कुछ. ठीक है, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड को, कुछ दब गया था कुछ स्विच. एनीवे, तो वाइनगार्टन इक्वेशंस आर दैट यू कैन राइट nu and nv in terms of these two equations. H square nu is equal to fm minus gl times r sub u plus fl minus em r sub v, and h square times n sub v is equal to fn minus gm times r sub u plus fm minus en times r sub v. These are Weingarten equations where E, F, G are first order fundamental magnitudes. First order fundamental magnitudes. And L and N are second order fundamental magnitudes. And of course, H square is G minus H square. So in terms of, we can write this like this. Okay, इससे हमें एक तो हमने अभी किया, हाँ उसके बाद हमने ये भी निकाला था. Yes, we also showed that nu cross nv जो है it would be equal to, that's interesting, t square by h n. And of course वो भी evident है क्योंकि nu है और nv tangent plane में है दोनों vectors, इनका cross product जो होगा वो होगा perpendicular to tangent plane, means in the direction of the surface normal, and some scalar term, the scalar normal. Okay, now what we do some dot products, triple scalar products we evaluate, so that because we have to use them further. इसको भी use करेंगे this particular formula for. So let's write down some important products जो हमें इससे मिलेंगे. इससे पहले भी दो चार थे और है,
मतलब जैसे हमारा आर यू आर वी के साथ है जो इम्पोर्टेंट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह से एन यू एन वी के साथ भी उसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं which are meaningful, जिनको हम आगे यूज करेंगे in checking whether sort of what we call whether a curve is a line of curvature on a surface, वो हम आगे पढ़ेंगे. So some important products, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वाला, now dn जो है वो बराबर है differential of n would be, because it's a differentiable function, nu du plus n sub v dv, and of course similarly dr जो है वो है r sub u du plus r sub v dv. And if I take the dot product of the two, dn dot dr should be equal to n sub u du plus n sub v dv dot product with r sub u du plus r sub v dv. Okay, तो dot product distributes our vector addition, तो उससे हमें मिलेगा, we will get n sub u dot r sub u times du square plus r sub u dot n sub v plus n sub u dot r sub v times du dv plus n sub v dot r sub v dv square. लेकिन इससे पहले हम कर चुके हैं जो हमारा सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, which is defined as n dot r u. This is also equal to n dot u minus of n sub u dot r sub u. यानी n sub u dot r sub u is equal to minus l. यानी ये जो यहाँ पे है, this is just minus l. इसी तरह से हमने देखा है, this is minus n, this is minus n, and this is minus n. So this can be written as minus l plus twice, this is l du square plus twice m du dv plus n dv square. And we can write second order fundamental magnitudes. So therefore the second order fundamental form जो है, जो encode करता है information about the curvature, which we haven't defined yet, curvature of the surface of the point. For second fundamental form, it can be expressed as ld square plus twice m du dv plus n dv square can be expressed as minus dn dot dr. Okay. नेक्स्ट, इसी तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले किया था n r u r v. अब हम कर सकते हैं ये प्रोडक्ट वैलिडेट n sub u n sub v. Now of course this is just n dot n u cross n v, और लास्ट टाइम हमने इस n u cross n v को देखा था, वो बराबर है n डॉट यहाँ आएगा t स्क्वायर by h n dot at one hand, this is just t square by h, which can be written as, of course, ln minus m square, क्योंकि t square इसके बराबर होता है, h is square root of eg minus f square. इसी तरह से थर्ड होगा अपना n sub u r sub u. Now this can be written as n dot n sub u dot r sub u. Now I know by Weingarten equations, nu can be written in terms of r u and rb. So it would be n dot nu किसके बराबर है, nu कहा गया अपना, r को लिखें कि nu को लिखें, कैसे
ओके, या तो दो तरीके हैं, या तो हम लिखें इसको NU को इन टर्म्स ऑफ RU जो कि मैंने कराया था, या फिर चलो एन RU को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ N. That's better. I take the dot product with NRU, which can be written as T square R sub U. क्या जाएगा NU? No, ये R चाहिए. हाँ फिर यहाँ पर NU क्रॉस RU. हाँ बिल्कुल सही, वही मैं सोच रहा था, कुछ मैंने गलत लिखा. Yes. So this is NU cross RU. So NU को ऐसे ही रखते हैं. RU को अगर हम लिखना चाहें so RU होगा 1/T square in terms of NU and NV. FM minus EN, ये हमने कल लास्ट टाइम किया था. NU plus I have EM minus FL times N sub B. फिर इसका फायदा है इन टर्म्स ऑफ NU and V में लिखने के, क्योंकि NU cross NU 0 होगा. I would be left with only this term NU cross NV. So it would be N dot NU cross 1/T square EM minus FL times N sub B. अब चाहे तो हम स्केलर को बाहर निकालें. So this would be 1/T square into EM minus FL is just the triple scalar product of N and U and V. और जो कि मैं ऊपर इवैल्यूएट कर चुका हूँ T square by H. So it would be 1/T square into EM minus FL multiplied by T square by H. So this is just equal to EM minus FL divided by H. Similarly, other cross products are also important. जैसे एक और हम कर सकते हैं सिमिलरली, लेकिन मैं चाहूंगा एज अ होम असाइनमेंट तुम कर लो. ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे मैं अभी किया वैसे. यानी मैं निकाल सकता था NV RU, ये बराबर होगा बाय द सेम टेक्निक यूजिंग these Weingarten equations, EN minus FM divided by H. N triple scalar with NV RV, this would be equal to Fn minus Gm divided by H, and of course last but not the least that's N URV, यही बचा है इसमें परम्यूटेशन, वो होगा RV, right? Fm minus GL divided by H. तो remember these and work them out, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Just have to use the Weingarten equations जैसे कि हमने पहले जो कैलकुलेट किए थे उसमें. दूसरा एक और है रिलेशन बिटवीन these cross products and the second order fundamental magnitudes, means the cross product of the normal with its partial derivatives. We can express them as in terms of RU and RV, and of course and some combination of first and second order, in fact second order fundamental magnitudes. उसमें हमारा ये है as an exercise, मतलब that H, या लिख देते हैं इसको, deduce the formulae, एक मैं करूंगा एक तुम करोगे, H times N cross N sub U is equal to M times RU minus L times RV, and H times N cross N sub V is equal to M times N times RU minus M times RV. Of course, your L and N है, they are second order fundamental magnitudes which we have defined. Fundamental magnitudes or coefficients or numbers. So let's do the first part, solution. It's easy. Now we know that Hn जो है वो बराबर है, हमने इसको डिफाइन किया है बेसिकली RU cross RV.
So if you differentiate this with respect to differentiating partially with respect to u, क्या मिलेगा मुझे? I will get h times n sub u plus h sub u times n plus cross is equal to, यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम, u के साथ कर रहे हैं r u u क्रॉस r sub v plus r u cross r u v या r v u. Mixed partial derivatives are equal because function की जो second partial derivatives है वो continuous smooth है हमारी function. Okay, now if I take the cross product with first equation, and I'm taking cross product with equation 1, taking cross product of both sides of n, both sides with n, sorry, both sides जब मैं n के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा, यहाँ जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे मिलेगा n cross h n u plus hu times vector n is equal to n cross, क्या था अपना लेफ्ट हैंड साइड है r u u cross r p plus अपना plus n क्या r u cross r u, ठीक है, ऐसा हमें देख. अब लेफ्ट हैंड साइड n का n के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सो यू शुड गेट एक्चुअली h बाहर n cross n u left hand side. Right hand side is a triple scalar, triple vector product, right? It is a cross b cross c type, and ये होगा n cross r u u cross r p, so vector product, plus n cross r sub u cross r sub u. But using that formula for a triple scalar product, कौन सा formula वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, that a cross b cross c हमेशा बराबर होता है, क्या होता है, it is, यार क्या होता है, it is b dot c times a, b dot c times a minus a dot b times c. I'm right. It will be a linear combination of a and c. Okay, so let me check. मैं पिछली बार क्या था किसी जगह, I don't remember. A cross b, it is a dot c. Sorry, मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, यहाँ थोड़ा गलत हो गया. It is a dot c times b minus a dot b times c. ये वाला ठीक है. तो ये मेरा a है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये मेरा b और c. तो ये जो ये फॉर्मूला में लगाऊंगा, सो इट वुड बी पहला a dot c, then it would be n dot rv times c, that is r u u, right, minus ab, and n cross I would have r u u times rv. Similarly, अगर मैं इस पे लिखूंगा दूसरा जो है दूसरा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, वो आएगा n dot r u v a dot c times b r sub u minus, and I have n cross r u times r u v. बस इतना ही है, ठीक है. अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर. अब एक चीज हम आराम से कर सकते हैं, वो ये कि n dot r u 0 होगा, n dot r b भी 0 होगा. क्यों? Because n is perpendicular to both r u and r b. देखो n की डेफिनेशन क्या है, it is basically r u cross r b divided by its magnitude.
एनीवे मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वेक्टर जो है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर यू एंड आर बी। जब भी n का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर यू एंड आर बी से तो वो जीरो होगा। इसका मतलब ये टर्म जीरो है और ये टर्म जीरो है। बचा क्या, n डॉट आर यू बी, दैट इज अवर m सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, और n क्रॉस आर यू ये है l, सो इट इज जस्ट, यानी हमें जो चाहिए था वो मिला, एच m क्रॉस n sub u बराबर होगा m आर यू माइनस l आर बी। फिर से कहा गया था, हाँ, सो ये जो है ये m है और ये l है, बाकी टर्म जीरो है, तो वे आर डन। अब मैं चाहूंगा तुम दूसरा भी निकालो, you just have to differentiate it partially with respect to v, बाकी थोड़ा इवेलुएट करना है। जहां हमने with respect to u किया ना, इसी को with respect to v करना है, partially differentiate, and we will get the second one, मतलब second formula. Okay, so this was another formula regarding these products, cross and vector products of these fundamental, these first and second order fundamental magnitudes. In fact, we're dealing now with n sub u, n sub v into different properties. Then I have r sub u, r sub u, r sub u, r sub u v. इनके आपस की रिलेशंस हमने अब सम फॉर्मूला कुछ हमने इसमें इंट्रोड्यूस की। Now we can do another important exercise for ye. What do they tell us about the surface? जैसे for example हम कर सिखा सकते हैं कि show that if LMN vanish everywhere, अगर ये जीरो हो जाते हैं on a surface at each point, हर point पे इनका वैल्यू जीरो है, on a surface, then the surface must be a plane. Then the surface must be part of a plane. ठीक है, हम पैचेस की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने पार्ट ऑफ अ प्लेन लिखा, लेकिन आई कुड हैव रिटन इट इज अ प्लेन, वो भी एक ही बात है। पार्ट का मतलब, सिंस in our all definitions we are basically dealing with the surface locally, so that's the reason we wrote short of a plane. So now suppose that the solution भी इसका उतना, now that's what we should expect, है ना, क्योंकि हमने दिखाया था it is actually, ये जो second fundamental form है, it is actually twice the projection of that जो प्लेन, मैं यहाँ पे tangent plane लेता हूँ, उसका neighboring point से जो ये distance है, it is twice the, it is 1/2 equal to the second fundamental form. अगर वो जीरो होगा तो ये फ्लैट होगा, अगर एलिमेंट जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे, तो वहां पे वो फ्लैट हो जाएगा. So that's what we are going to prove. Now suppose L is equal to M is equal to N is equal to 0. Yeah. So then since L is defined as minus N sub U dot R sub U, and M is equal to N sub V dot R sub U, it is also equal to minus N sub U dot R sub V, and N is defined as minus N sub V R sub V dotted with R sub V, and since RU and RV cannot be zero, essentially RU cannot be zero vector for a regular point, RV also cannot be zero because the cross product actually zero नहीं हो सकता for a regular point. So we get, तो हमें मिलेगा इसमें से, देखो अगर L zero है, ये zero नहीं है, then the other vector must be zero or it must be perpendicular to that, right? And therefore either NU is equal to 0 or, क्योंकि ये 0 है, L भी 0 है, M भी 0 है, M भी 0, or NU is perpendicular to both RU and RV, which means that NU
must be parallel to n, क्योंकि n is also perpendicular to both RU and RB. ये भी इनको पैरेलल है तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों n भी इसी डायरेक्शन में है तो mu भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दे शुड बी पैरेलल, अगर ये सच है, ठीक है. But this cannot be true. Why? Because nu is perpendicular to n. Because n is a vector of क्या बोलते हैं fixed magnitude. तो इसका डेरिवेटिव इसके परपेंडिकुलर होगा, which means इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी इसके परपेंडिकुलर होंगे. So this cannot be true. But this cannot be true. This cannot be true as nu is perpendicular to n, because n is a vector of fixed magnitude. Fixed यानी 1 है इसका magnitude. और अगर ऐसा है तो hence एक ही रीजन हमारे पास बचता है that nu must be equal to 0, which means that n does not depend, it's constant when we change u. With respect to u, it's a constant, and n is independent of u. n की डायरेक्शन u पे चेंज ही नहीं है. Okay, applying similar, मतलब by the same argument, nb would be equal to 0, and hence n is independent of v. यानी अगर हम u भी चेंज करें तो n पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन सेम रहती है. यानी hence, so therefore n is a constant vector, it doesn't change at each point of the surface. n is the surface normal, है ना, point of the surface. यानी ये तभी हो सकता है जब मेरी सरफेस प्लेन हो, तभी जो सरफेस नॉर्मल है वो उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब इट शुडंट चेंज, इट शुड बी सेम. क्योंकि जैसे ही हमारा सरफेस में थोड़ा सा कर्वडनेस आ जाएगी तो इस यहाँ टेंजेंट प्लेन इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ टेंजेंट प्लेन इस डायरेक्शन में होगा, इसका एन इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा. सो दे कैन नॉट बी इन दिस कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी सेम. It can only be same if my surface is a plane. Hence, the surface must be part of the plane. Okay. So let's know another problem. We suppose the first and second order fundamental magnitudes, that's E, G, F, and N, M, N, are proportional. Then we will show that the surface must be either a plane or it must be a sphere, part of a sphere. So let's write down that as an exercise. Now a real surface for which any E by L is equal to F by M is equal to G by N holds, अगर true है, it is either a plane or spherical, or it is some part of sphere. Okay, so let's do this. इसका solution जो होगा वो होगा, now we know that, जो कि इससे पहले हम यूज कर चुके हैं, L जो है वो बराबर है -n sub u dot r sub u, M जो है वो है n sub u dot r sub v minus, it's also equal to -n sub v dot r sub u, और हमारा जो n है, जो सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स है, वो है n sub v dotted with r sub v.
ऑल्सो पता है ये ई जो है वो बराबर है आर यू डॉट आर यू, एफ जो है वो बराबर है आर यू डॉट आर वी, और जो जी है वो है बराबर आर यू डॉट आर। सो लेट्स कॉल दिस, पूरे सिस्टम को हम कहेंगे वन। ठीक है, सपोज जो हमारा अभी है E by L is equal to F by M is equal to G by N, and that there will be some, so could be some number, let's call that 1 by mu. Let's see, मतलब अगर ये तीनों बराबर है, मान लो ये तीनों किसी नंबर के बराबर है, तो 1 by mu हमने इसलिए किया ताकि हमारी थोड़ी कैलकुलेशन हो जाए। हम म्यू भी रख सकते थे, सी भी रख सकते थे, लेकिन उसका होगा कि फिर हमारा हर जगह वो रेसिप्रोकल में आ जाता, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो इट इम्प्लाइज दैट L is then equal to mu times E, M is equal to mu times F, and N is equal to mu times G. So therefore, using by first, I should get, अगर मैं first यूज करूं पहले L के लिए, इसमें L का वैल्यू और E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए L है बराबर म्यू E के, so it means mu times R sub u is equal to E का मैंने L is minus N sub u dot R sub u. So which means basically इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, मैंने क्या लिखा, ये कहाँ से लिखा, जिस R u dot R E जो है that's R u dot R u, so it should be mu times R u dot R u. इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा और R u कॉमन निकालूंगा, यानी I should get mu times R u plus N sub u whole dotted with R u is equal to 0. ओके, सिमिलरली ये तो इसके लिए सिमिलरली दो और इक्वेशंस मिलेंगी, जो होगा मतलब सिमिलरली आई विल गेट mu times R u plus N sub u डॉट 4 मिलनी चाहिए हमें। सो लेट्स कॉल दिस चारों को, ओके ये भी होगा ऑफ कोर्स, म्यू और यू से आर पी इज इक्वल टू 0, देन आई विल हैव म्यू टाइम्स आर सब, दोनों का एक है, सो इट शुड बी आर सब वी प्लस एन सब वी डॉट आर यू इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा होगा म्यू टाइम्स, और क्या बचा कुछ पॉसिबिलिटी, एक तो है ये आर यू कौन सा बचा, ये बचा, मतलब इन सबको यूज करके हमें ये मिलेंगे 4 इक्वेशंस। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन दिस सेट 2, इन्हीं में से मतलब एक में हमें ओके एक में हमें ये मिलेगा, मतलब हम दो यूज कर सकते हैं ना m के लिए, दो वैल्यूज, जब हम एक करेंगे तो एक मिलेगा, दूसरे करेंगे तो दूसरा मिलेगा, मतलब यू ट्राई देम आउट। जैसे मैंने ये निकाला, दूसरी इक्वेशन में m के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो उसकी दो इक्वेशंस, और ऑफ कोर्स n के लिए जब करेंगे एक और वैल्यू तो उससे चौथी इक्वेशन मिलेगी। ओके नाउ इससे हम रिड्यूस करेंगे इन 4 इक्वेशन से, ये जो हमारी सरफेस है या तो ये प्लेन होना चाहिए या सिर्फ। Now, since n is, you just remember that, I wish I could just paste it here. इसमें है कुछ ऐसा कि हम कर सकें, इसको सेलेक्ट और दूसरे पेज पे ले जाएं, सिलेक्शन तो है कुछ नहीं होता, इससे तो बड़ी हो गई। ओके नाउ सिंस n is perpendicular, जैसा कि हमें पता है, since n is perpendicular to both n sub u and n sub v, and sub v,
therefore therefore NU and NV lie in the plane generated in a tangent plane by R sub U and R sub U. Okay, and hence ये जो combination है mu R sub U plus N sub U, देखो this is inside the tangent plane, this is also inside the tangent plane, therefore their combination is also in the tangent plane. ठीक है ना? And similarly mu RV plus N sub V जो है they also lie in the tangent plane. And RU and RV both cannot be equal to 0. None of them can be equal to 0 for a regular point. We're assuming our surface to be regular throughout. तो सिचुएशन क्या है, ये जो RU RV है जो पिछली इक्वेशन में, RU is perpendicular to this vector, RV is also perpendicular to this, मतलब RU and RV are both perpendicular to this vector. ये जो पहली दो इक्वेशंस है, ये टेंजेंट प्लेन में लाई करता है, ये भी टेंजेंट प्लेन में लाई करता है, और ये RU को भी परपेंडिकुलर है और RV को भी परपेंडिकुलर है. So let me draw a picture to just get you an idea. मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, देखो मतलब डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, अगर ये दोनों जीरो होते तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता, व्हाटएवर दीस वेक्टर्स आर, लेकिन हमें पता है ये वेक्टर भी जीरो नहीं है, ये वेक्टर भी जीरो नहीं है, और ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं और इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, और उसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं. देखो मेरे पास आर यू ऐसे है और दूसरा आर भी ऐसे है. अब कोई ऐसा वेक्टर है जो इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है ना? मतलब ये हो सकता है कोई ऐसा वेक्टर हो जो इसको भी परपेंडिकुलर हो और इसको भी. इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस आर यू एंड आर वी एक ही डायरेक्शन में, तभी कोई वेक्टर ऐसा हो सकता है जो, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तभी कोई वेक्टर ए हो सकता है इस प्लेन में जो दोनों को परपेंडिकुलर है. लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता विद इन प्लेन. हाँ, प्लेन से बाहर तो हमेशा पॉसिबल है. तो अगर ये प्लेन है मेरा स्क्रीन, तो ए कोई वेक्टर है, इट कैन नॉट बी perpendicular to two vectors unless those two vectors are in the same direction. But RU and RV can never be in the same direction क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है. So हम कह सकते हैं since RU cross RV is not equal to 0, therefore mu RU plus NU cannot be perpendicular to both RU and RV. तो बची एक ही पॉसिबिलिटी क्या बची कि ये खुद जीरो है, ये वेक्टर. दिस मस्ट बी, तभी तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि ना ये परपेंडिकुलर है ना वो दूसरा वेक्टर जीरो है. सो देयरफॉर वी मस्ट हैव देयरफॉर म्यू, चलो मैं लिख देता हूं इस तरह से, म्यू RU plus NU dot N dot RU equal to 0 and mu RU plus N sub U dot RV equal to 0 will be true if and only if mu dot RU plus N sub U is equal to 0 or N sub U is equal to minus mu times RU. Let's call this equation 3. Similarly, we can prove that using the other two equations. Similarly, from the other two equations, we get कौन सी इक्वेशन थी हमारी दूसरी, वो है mu RV plus N sub V dot RU is equal to 0 and mu RV plus N sub V dotted with RV is equal to 0. इनसे हमें मिलेगा that
वही ना, वो 0 होना चाहिए, यानी NB must be also equal to minus mu times RB. Right. Let's call this, हमने क्या नाम दिया था यहाँ, इक्वेशन का क्या नाम दिया था, 3, तो इसका इक्वेशन का नाम देते हैं, कहाँ गई, 4. ओके, ये 3 और 4 इक्वेशन है. सो डिफरेंशिएटिंग पार्श, पहली वाली तीसरी वाली इक्वेशन कहाँ गई, इसको हम करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू, और दूसरी वाली जो थी अपनी कहाँ गई, डिफरेंशिएटिंग थर्ड partially with respect to v and 4 partially with respect to u, हमें मिलेगा n uv is equal to minus mu, और वहां क्या था पहले, uv आएगा आई थिंक, माइनस mu v आर यू, आई थिंक वही था, हाँ बिल्कुल सही है. एंड दूसरे से मिलेगा हमें अगेन द सेम थिंग, एन वी यू इज इक्वल टू माइनस म्यू आर यू वी, एक्चुअली आर वी यू एक्चुअली होना चाहिए, आर वी, चलो आर वी यू लिखते हैं, माइनस एम यू आर वी. So this is what I should get. Right. So if we using the fact that the mixed partial derivatives are equal, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बचा क्या, ये इसके बराबर होना चाहिए. So there we get mu v r u should be equal to mu u r v, right? Let's call this equation 6. 6 था नहीं 5. अब काफी सारी इक्वेशंस होगी, लेकिन हमारा काम हो गया. काम कैसे हो गया देखो, अब आर यू एंड आर बी ये वेक्टर नहीं है. हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू एंड आर बी एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, है ना, क्योंकि अदरवाइज इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है. तो ये इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं है अनलेस ये नंबर जो है यहाँ पे म्यू एंड वी ये दोनों 0. नाउ सिंस RU cross RB is not equal to 0, yani they cannot be linearly dependent. Therefore, 5 will hold if and only if mu u is mu sub u is equal to mu sub b is equal to 0, and it doesn't depend upon a and b, which means that mu must be a constant. It does not change from point to point, which means that mu is a constant. Now case 1, constant तो है ये, लेकिन ये 0 भी हो सकता है. Suppose mu is not equal to 0. अगर mu 0 नहीं है, then from mu times RU is equal to minus n sub u. अगर ये 0 नहीं है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो I get RU is equal to minus 1 by mu n sub u plus, I just integrate them with respect to u partially. So that would give me r is equal to, क्योंकि ये constant है, ये 1 by mu ही रहेगा और ये n हो जाएगा, plus some constant vector a, where a is constant, which gives me r minus a is equal to modulus of the norm of minus 1 by mu no n, actually that would be mod of 1 by mu times norm of n, लेकिन n की length 1 है, so we get r minus a is equal to some constant.
positive constant, which is modulus. So which implies that R is a sphere. It is exactly the equation of a sphere, centered at A, centered at A. Okay, case second अगर म्यू 0 हुआ तो फिर तो हमारा काम आसान है. वो क्या? Then NU भी 0 होगा and NV भी 0 होगा, which means N is a constant. So which means that the surface is a plane. तो अगर जो ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्ट्स है ना, ये मैग्नीट्यूड्स जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं, अगर ये म्यूचुअली मतलब अगर ये प्रोपोर्शनल है, देन दो ही पॉसिबिलिटीज है सरफेस के लिए, या तो वो प्लेन होगी या फिर वो क्या स्फीयर होगी. Now moving ahead, suppose now I have got parametric curves on a surface, as you now know. So you must know that parametric curves are obtained when we keep one of the parameters constant. So I usually draw them like, anyway. So let's call these U curves. U curves का मतलब along these V is constant. Yeah, इनको मान लो U curves. चलो U curves, ये जो ये है ना, इनके ये जब मैं दिखाता हूँ तो कुछ और कर्व दिखती है. मेरे कहने का मतलब इस टाइप की जो ये टाइप की कर्व्स है, इनको अगर मैं मानता हूँ U curves, तो ये जो इस डायरेक्शन में मैंने इस तरह से कर्व बनाए, उनको मैं V curves मानूंगा. और V curves का मतलब along these curves U is constant, and along these curves V is constant. They are functions of just U and V. Therefore, tangents to this vector where V is